Hello and welcome, my dear friends of Rajeshwar School, class 10th A, B, and C. Today I will be highlighting the main points of our lesson 10, the Samban and Benaras, written by Betty Rinch. Hope you all prepared and ready. So I shall begin now. The chapter starts. This is the recap of whatever we have learned yesterday. The chapter starts with the description of Gautam, the Buddha, and the life in the and his life in the royal family. His name was Siddharth. Okay. Initially, he was sent to study Hindu scriptures, and then he was married after coming back to a princess. Since he was a prince, he was married to a princess. He belonged to a royal family. You all know. Siddharth saw a sick man, an old man, a funeral procession, and a monk. These sights moved him so much that he decided to give up the comfortable life in search of the divine enlightenment. He sat under a bow tree, meditating, and got enlightenment after 7 days. And he came to be known as Buddha. He gave his first sermon at the Ghats of Benaras. What development happens now? A woman came to him to bring her dead son to life. Gautam Buddha asked the women to bring a handful of mustard seeds from a house where there had been no death. The women moved from one house to the other, but they didn't find any house where there no death that occurred. Then she came to realize the inevitability of death. That was common to all and was the ultimate truth of life. I shall repeat, death was common to all and was the ultimate truth of life. So after going through the lesson, few questions arise in our mind. They come to our mind in front of us. First among them is, why did Kissa Gautami come to Gautam the Buddha? What did Gautam advise her to do? How did she follow his advice? What new knowledge did she get thereafter? Or you can take it otherwise also. In the other sense, what does Buddha make Kissa Gautami understand and how? Kissa Gautami, again I shall tell you for your knowledge. Kissa Gautami had an only son and he died. And in her grief, she took the dead child to all her neighbors. A man told Kissa that he couldn't give the medicine, but he knew a physician who could give the medicine. Here's Gautam, the Buddha. Kissa went to Gautam and told him about the case. Buddha told her to bring a handful of mustard seed. He told her that the mustard seed must be brought from a house where no death had occurred. But she did not find any house where the death had never occurred. Kissa became tired and hopeless. She sat watching the lights of the city. In the darkness, she considered the fate of men. It was her new knowledge.
She learned the lesson that life and death are the two sides of the coin. Anyone born will die one day. The next question, an important one, is that what truth of life does Gautam the Buddha give out in his first sermon? What moral teachings does he preach about the truths of sufferings of life? What did Buddha say about the death and sufferings? What lesson on death and suffering did the Buddha teach Gautami in the chapter? The sermon in Benares. And the answer to it is the Buddha said in his first sermon that human life is brief. It is troubled and painful. There is no means by which one can avoid dying. Both young and adult, fools or wise, fall to death. They are led to death like an ox taken to slaughter. Anyone will not obtain peace of mind from weeping or grieving. On the contrary, his pain will be greater. His body will suffer. One who speaks peace of mind shall seek it if he overcomes all sorrows. The wise know the truth of life. It is those who are born are to die one day. So don't grieve on death. They know that death is essential. So what we learn here is through the story of Kisa Gautami, Buddha tries to preach to the common man. So the story of Kisa Gautami, Gautam Buddha tried to teach the common men that death is inevitable. Kisa Gautami didn't know and understand that death is inevitable. Anyone born has to die one day. As a ripe fruit has to fall one day on the ground, so a person has to come to death one day. He taught this lesson to Kisa Gautami when her only son had died. Gautam Buddha asked her to bring mustard seeds from the house where no one had died. Since there could never be such a house, Gautami understood the bitter truth of life. Death is common to all. Gautam Buddha taught this aspect of life to the common man through his sermons. The world is afflicted with death and decay, but the wise men do not grieve. They know that all have to die one day. They too shall die one day. He tells the common man that they should know this truth, and not grieve. So what does Buddha says? So Buddha Bhagavan ने क्या कहा? The world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of life. This statement is appropriate even for today's life. We must know that this world is subject to death. Anybody who is born has to die one day. If we look into the past, we shall find that numberless people have died due to natural deaths. So death is a hard and harsh reality. No one can escape it. As the ripe fruit has to fall down to the earth dead one day, so a person has to die after he grows old. Since it is a hard truth, the wise persons know it. They know that they too shall die one day. So they do not grieve on as they know the ultimate truth.
They are those who have overcome all sorrow and are not moved in it. These wise men do not complain or grieve in deaths. So the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. What is the statement of Buddha? I'll repeat for you. That is to find out moral value for Kissa Gautami, what she has learned after the death of a sight of her own child. The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. It is fact that the life of mortals in this world is full of troubles. Excuse me. If it is brief, it has pain. The tension of living is always there. So human life is a sad and unhappy experience. Death is a reality. Anyone who is born has to die one day. This reality is learned by Kissa Gautami after she goes from home to home. She does so to get mustard seeds from a house where the death has not occurred. She doesn't get this. And then she realizes the basic truth of life. This is what Gautam the Buddha wanted to teach her. Wise men do not grieve at a death as they know the truth. So, guys, for a better understanding, please watch this video clip. This is for your understanding and knowledge about the lesson. Do watch it carefully. Any doubts, you can please consult me anytime. 10 फर्स्ट फ्लाइट का पोयम दी सरमन एट बनारस। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो बनारस एक होली प्लेस है, धार्मिक जगह है जो बैंक ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी के किनारे पर ही ये सिटी है। तो इस चैप्टर में हम गौतम बुद्धा के द्वारा सरमन एक रिलीजियस लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने इस दुनिया को दिया था। गौतम बुद्धा बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर थे और ये स्टोरी एक कलेक्शन वेटेरन्स ऑफ वैल्यूज एंड वॉइस ऑफ कॉलेज रीडर 1975 से लिया गया है। गौतम बुद्धा का पूरा नाम जब वो प्रिंस थे तो सिद्धार्था गौतमा हुआ करता था, जिनका जन्म 563 बीसी टू 483 बीसी में हुआ था। नॉर्दर्न इंडिया में जब ये 12 साल के थे तो इन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था, जहां इन्होंने हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन एज होली टेक्स्ट्स। और जब ये 4 साल बाद वापस आए तो इनकी शादी करा दी गई एक प्रिंसेस के साथ। फिर उनका एक बेटा हुआ और ऐसे ही गौतम बुद्धा ने 10 साल तक रॉयल लाइफ प्रिंस वाली जिंदगी जिया। अब तक तो काफी अच्छा चल रहा था गौतम बुद्धा की जिंदगी अपने वाइफ बच्चों के साथ, लेकिन जब गौतम बुद्धा 25 साल के हुए और इससे पहले उन्होंने दुनिया में कभी भी सफरिंग नहीं देखा था, लेकिन एक बार जब वो हंटिंग शिकार करने के लिए गए तो उन्हें एक सिक मैन बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन एक बूढ़ा आदमी देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन किसी डेड मैन को अंतिम विदाई के लिए ले जाते हुए देखा। और लास्टली उन्होंने एक मॉन्क पुजारी को देखा जो भीख मांग रहा था। और इन चारों सीन्स को देखने के बाद से ही गौतम बुद्धा की थिंकिंग में विचारों में काफी चेंजेस आ गए और उन्होंने दुनिया को त्याग दिया, राजपाट छोड़ दिया और वो इस दुनिया में निकल पड़े ताकि वो जान सके टू सीक इनलाइटमेंट, यानी कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में जान सके। कंसर्निंग दी सॉरोज, ये जान सके कि आखिर लोगों को दुख क्यों होता है। ये सब जानने के लिए वो निकल पड़े। वो बस इन्हीं सवालों के जवाब के लिए 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और ये कसम खा लिया
कि जब तक उन्हें इन क्वेश्चंस के बारे में, ज्ञान के बारे में नहीं पता चल जाएगा कि आखिर इस जीवन का, लाइफ का ट्रुथ क्या है, वो उस प्लेस से उठेंगे नहीं। अब जब 7 डेज तक सिद्धार्थ गौतमा उसी पीपल ट्री के नीचे बैठे रहे, तब जाके उन्हें इनलाइटेंड मिला और उस पीपल ट्री को बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, कहा जाने लग गया और सिद्धार्थ गौतम अब बुद्धा के नाम से जाने लग गए। बुद्धा का मीनिंग होता है अवेकेंड, जागना, यानी जिसे सच के बारे में पता चल गया हो। बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया, यानी रिलीजियस और मॉरल टॉक दिया। बनारस जो एक होली प्लेस है, रिवर गंगा के किनारे, जहां नहाने के लिए एक सबसे अच्छा प्लेस है। लोग कहते हैं गंगा नहा ले, पाप धुल जाएंगे, तो लोग इसी प्लेस की बातें करते हैं। तो जो बुद्धा ने रिलीजियस लेक्चर दिया था, उसे आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। तो ये सरमन रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा के विजडम के बारे में, अबाउट जिसे बुद्धा पहले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सफरिंग है क्या। तो आइए हम लोग एक स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये काफी अच्छी कहानी है। तो ये कहानी है किस्सा गौतमी की, जिसका बस एक ही बेटा था जो मर गया था। अब इस दुख में वो अपने बेटे के डेड बॉडी को कैरी कर अपने नेबर्स के पास गई और बोली, प्लीज कुछ दवा दे दीजिए। और ये सुन लोग कहते थे कि वो पागल हो गई है, लड़का तो मर चुका है। किस्सा गौतमी काफी देर इधर उधर भटकती रही। तभी उसे एक आदमी मिला जो कहता है, तुम्हें कोई दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसे फिजिशियन डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तभी वो कहती है, उस आदमी से प्रार्थना करती है, प्लीज जल्दी से मुझे बताइए कि वो कौन है। तो वो आदमी कहता है, तुम जाओ सत्या मुनि के पास, जिसका नाम बुद्धा है। अब किस्सा गौतमी बुद्धा के पास पहुंचती है और विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है, लॉर्ड मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए कोई दवा दे दो। तभी बुद्धा जवाब देते हैं, ठीक है, मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए, सरसों का बीज चाहिए। ये सुन किस्सा गौतमी काफी खुश हो गई, क्योंकि मस्टर्ड सीड तो उसे किसी भी घर में मिल जाता। लेकिन तभी बुद्धा ने कहा कि ये मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाना होगा जिसके घर में उसने उस घर में कभी भी ना तो कोई चाइल्ड, बच्चा, हस्बैंड, पति, पेरेंट, परिवार, फ्रेंड, दोस्त खोया ना हो, यानी कि जिस घर में किसी की भी डेथ नहीं हुआ हो, ऐसे ही घर से तुम्हें मस्टर्ड सीड को लाना होगा। किस्सा गौतमी काफी लोगों के घर में गई, मस्टर्ड सीड मांगी। लोग उस पे दया करके मस्टर्ड सीड तो दे दिया करते थे, लेकिन जैसे ही वो किस्सा गौतमी पूछती थी कि क्या कभी भी आपके सन्स और डॉटर्स और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कभी मरे हैं, तो वो लोग जवाब देते थे, जिंदा लोग तो कुछ ही हैं, लेकिन मरे हुए तो काफी ज्यादा हैं। वो लोग किस्सा से कहते थे, प्लीज ऐसे सवाल मत पूछो, हमें हमारे दुखों को, गम को ताजा मत करो, याद मत दिलाओ। और किस्सा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो। अब किस्सा गौतमी काफी थक गई, होपलेस हो गई, और वो फिर एक रोड के किनारे बैठ जाती है और शहर के जो लाइट्स थे जो ब्लिंक कर रहे थे उन्हें देखने लगती है। और वो लाइट्स एकदम से अचानक से बंद हो गए। लाइट बंद होते ही हर जगह अंधेरा हो गया और ये देख किस्सा को ये रियलाइज हो गया कि ये जो जिंदगी है ह्यूमन की, इंसानों की जो किस्मत है, वो ऐसे ही लाइट्स की तरह है, टिमटिमाते रहती है, फ्लिकर करते रहती है, कभी चमक उठती है तो कभी बुझ जाती है। तभी वो ये सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हूँ। इस दुनिया में जो आया है, हम सबको कभी न कभी मरना है। इस लाइफ में जो दुख है, अनहैप्पीनेस है, उसे बस एक ही चीज हमें बाहर निकाल सकता है, हमें इमॉर्टल बना सकता है, जो भी लोग इस सेल्फिशनेस को त्याग देगा। तो बुद्धा का ये सरमन भी यही कहता है दैट जो भी लोग इस दुनिया में आया है, उन सबको
दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा और डेथ भी होगा, उसे मरना भी होगा। वो कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जन्म हुआ है, उसका मरना भी फिक्स्ड है, तय है। जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं तब तो डेथ का आना नेचुरल है और ऐसा ही भगवान ने बनाया है और हर एक लिविंग बीइंग के साथ ऐसा ही होता है। अब गौतम बुद्धा एक एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि जो फल फ्रूट पक जाता है उसका नीचे गिरना तय है, उसका नीचे गिरने का चांस बढ़ जाता है और ठीक ऐसा ही जो भी इंसान का जन्म हो जाता है उसे भी एक ना एक दिन मरना तय है। दूसरा एग्जाम्पल बुद्धा देते हुए कहते हैं कि जितने भी मिट्टी के बर्तन कुम्हार पॉटर बनाता है उनका भी एंड हो जाता है जब वो टूट जाता है। तो ठीक ऐसे ही हर एक लिविंग बीइंग की लाइफ है। आगे बुद्धा कहते हैं चाहे वो यंग हो या एडल्ट, चाहे वो फूल्स हो या वाइज, सभी लोगों को मरना ही है। कोई भी मौत से बच नहीं सकता। कोई भी फादर अपने बच्चे को, सन्स को, बेटे को बचा नहीं सकता। कोई भी किंग्समैन रिलेटिव अपने किसी भी रिलेशन को, दूसरे रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता। सबकी डेथ निश्चित है। बुद्धा ये कहते हैं तुम इस चीज को मार्क जरूर करना, ध्यान जरूर देना कि जो ये रिलेटिव्स हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, दुखी भी हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक ऐसे ही हर एक मॉर्टल को मरना ही है और इन्हें देख, इन मॉडल्स को देख ऐसा लगता है मानो एक ऑक्स को, बैल को एक स्लॉटर्स हाउस में ले जाया जा रहा है काटने के लिए। तो गौतम बुद्धा किसा गौतमी से कहते हैं कि ये दुनिया गंदगी से भरा हुआ है, डेथ से घिरा हुआ है, मृत्यु से घिरा हुआ है और जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है वो अपने नजदीकी के मरने पे दुखी नहीं होता। तो बुद्धा किसा गौतमी से कहते हैं कि तुम इस बात को मान लो कि तुम्हारा बच्चा मर गया है और इस दुनिया की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि ये दुनिया ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है। गौतम बुद्धा ये कहते हैं कि रोने से, दुखी रहने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपका दर्द और बढ़ जाएगा, आपके शरीर को भी तकलीफ होगा। जो भी लोग दुखी हो जाते हैं अपने करीबी को खोने के बाद वो लोग बीमार पड़ जाते हैं और ऐसा करने से, दुख मनाने से उसके अपने वापस नहीं आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो वापस आ जाएंगे। उनके रोने से, दुख मनाने से जिन लोगों को शांति चाहिए वो लोग लैमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ जैसे चीजों को खत्म कर देना होगा। तो जो लोगों को इन चीजों को कंट्रोल करना आ जाता है, जो कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे दुख को कंट्रोल कर लेते हैं, दर्द को कंट्रोल कर लेते हैं, कंप्लेन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो इंसान अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेता है और ऐसा कर उसे काफी शांति मिलता है और वो इंसान आजाद हो जाता है दुख से, दर्द से और उसे ऐसा लगेगा दैट ही इज ब्लेस्ड, उसे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। So student, this was the full expansion of this chapter. I hope आप लोग So, my dear guys, this is the end of this explanation about the lesson, the sermon at Benares. Hope you've understood it. How did Gautam Buddha begin his life? What made Gautam Buddha leave the world? Where did Gautam Buddha get enlightenment? And what did he do after that? Where did he deliver his first sermon? And what does it contain? What had happened to Kisa Gautami? And why did she go to Gautam Buddha? What did Gautam Buddha say to Gautami? What did Kisa Gautami learn from Gautam Buddha? Why did the Buddha choose Benares to preach his first sermon? So these all questions have been answered through this. So that's all for today, guys. Thank you very much. Goodbye. Good luck. Do take care of yourself. God bless you all.